तो ये बहुत लंबी बात मैं छोटे समय में नहीं कहूँगा। सबसे पहले जो आपने कहा युवकों के लिए क्या मेरा संदेशा है, ये भी असली किताबें पढ़े। ये 5-10 सेकंड के स्क्रीन रोल, छोटे आर्टिकल, इसमें डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं होता है। अगर आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज चाहिए तो असली किताबें पढ़ें, उनके पन्ने पलटें और किताब की जो सुगंध है उसको सूंघें, असली चीजें में जाएं। युवक की बात की आपने, मैंने कहा डिजिटल गेम्स ना खेलें, बाहर जाके असली गेम्स खेलें। अभी जो आप नॉलेज बोल रहे हैं और ये मिलिट्री के बारे में, तो आपकी सेना हमेशा तैयार है। हम पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार रहेंगे और हर एक चुनौती का सामना करना हमें आता है। हमें क्या चाहिए कि पूरा देश एक साथ जुड़ के रहे। और इस कैंपेन में ऑप सिंदूर में सबसे बड़ी बात ये रही कि पूरा देश इकट्ठा होके उसने इस मुश्किल घड़ी का सामना किया। जो हमारे एयरफोर्स के लोग हैं, जो हमारे आर्मी के लोग हैं, जिन्होंने सर्विस में ये युद्ध लड़ा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के जनता हमारे साथ थी, कोई हड़बड़ी कहीं नहीं मची किसी भी शहर में, और पूरा देश एकत्रित होके हमने हर एक चुनौती का सामना किया। तो यही हमारी ताकत है और आगे चल के यही हमको हमेशा फतेह दिलाएगी। एक और क्वेश्चन है जनरल बिपिन बख्शी साहब की, जनता का थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं एक सवाल था कि जब शुरुआत हो गई थी तो एंड भी तसल्ली से कर देते। मैं कई इस तसल्ली में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नहीं, मैं कई ऐसे डिस्कशंस में पाता हूँ कि जो हमारी सिविलियन जनता है वो जल्दी और लंबा जंग चाहती है, और हम जो सैनिक हैं वो कम और छोटा जंग ही चाहते हैं, क्योंकि हमें जंग का महत्व पता है। हमें देश एक जंग के लिए क्या कीमत चुकाएगा वो हमें पता है। हमारा लक्ष्य जो था वो 7 मई सुबह 6 की रात, 7 मई सुबह की टाइम, जो 9 टारगेट हमने बर्बाद किए, हमारे लक्ष्य तो पूरा हो चुका था। और जो भी हम डैमेज करें, जो आप पूछ रहे थे कि हमें और थोड़ा पाकिस्तान को तबाह करना था, वो कुछ ही टाइम में वो जो भी डैमेज करेंगे वो उसको पूरा कर लेगा। लेकिन जो हमारा उद्देश्य था वो एक्चुअली हमारा पूरा हो चुका था। तो इसलिए जब युद्ध विराम की बात आई, हम तैयार थे। अगर हमें यह हुक्म मिलता कि आगे चलो तो हम आगे बढ़ा देते। लेकिन हमारे देश की तरफ से ये पॉलिटिको मिलिट्री नेता और सैनिक दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। Experts and actual participants of Op Sindhu to arrive at a cogent picture of the operational details, and I went through. It was as close as to the reality. I must compliment them for that. For me personally, it was a deja vu feeling. Maybe I would have also put down in a similar manner. Of course, I can't and I will not. So the book retraces the causation, the human tragedy, and the whole of nation approach response in a lucid manner. I picked up the book basically for skimming, but finished with deep diving. So Op Sindhu was a perfect example of how all facets of DIME come together to ensure national victory. So on the DIME front, there is the diplomacy. The statement of ME on the CCS meeting of 23rd April set the tone for events to follow. Holding the IWT in abeyance and reduction of diplomatic staff were direct actions, which I am sure were supplemented by a slew of other diplomatic engagements, which ensured worldwide condemnation of the terrorist strike. And they rightly interviewed the diplomat whom they interviewed because he played a pivotal role during, that is, the pre and post preparation. More importantly, visits by all party delegations to various countries out of Sindhu vindicated the responsibility with which India conceptualized, conducted, calibrated and communicated about operations. Coming on to the info domain, which saw a series of coordinated actions, well planned and put into place even before the first weapon was fired. Op Sindhu was given to me, if I remember, on 29th or 30th of April, but it was not put out in the media. And as you are aware, that the tweet "Justice is Served" had huge record hits on Twitter. Today, as of we speak, it's nearly 23 million. The IW was credible, consistent, and to a plan, which was unveiled in a sequential manner.
And those who said that if you start early, you will be able to fill up the space, they stumbled and they were proved to be telling lies. There were actions in this domain from both the sides, but winner in the long run was the one whose narrative was based on truth and backed with a credible evidence. As they say, seeing is believing. And the world saw on their TV screens how the 9 targets were destroyed in a synergistic manner, that all 3 forces were involved in it through 22 minutes of precision, non-escalatory strikes, and of course followed by images of later on the damaged airfields or equipment on ground. In the military domain, we all know of the actions and reactions on both sides. 3-dimensional chess was being played, where we had war-gamed our actions in-house with our red teams and were fully prepared for multiple actions to dominate the complete escalation. Operation Sindhu also showed that the jointness is no longer something we aspire to do in seminars or discussions. It is something we practiced under pressure, and we came out as a successful synergistic organization. Chance and friction. These involves are often beyond the control of the protagonist. Tactical ups and downs will happen during the conduct. However, a wholesome positive end state based on our initial aims is what segregates a very successful mission from a not so successful one. And I can say proudly, Op Sindhu was the most successful operations. The old assumption that India requires long time for decision making as also long drawn mobilization cycle to synchronize force application was quietly edged out of the window. And one could say that the adversary